Sir, shall we start? Yes, sir. No problem. Okay. So, good afternoon, one and all, who are present here. Today, we discuss the new topic. Everyone can make innovation, but there are n number of challenges are created while doing the innovation. So, today's topic is based on challenges in innovation delivered by Professor Abdul Gaffar sir. Gaffar sir has completed his graduation B in civil engineering, MTech in structural engineering. He is pursuing his PhD, okay, and presently working as an assistant professor and head of the department of first year, SBJITMR Institute of Technology, Management and Research, Nagpur. Okay, so without wasting a time, I request Professor Gaffar sir to continue the session and enlighten the various challenges in the innovation. Hand over to Gaffar sir. Welcome, sir. Thank you so much, sir, for a nice introduction. And I heartily welcome all the participants present in this session. Now, as far as my topic is concerned and the time given by the Sanjeev Harinkhede sir, my today's deliberation on the challenges of the innovation. Now, as we discussed in the previous sessions, what are the innovation, what are the types of innovation, what are the policies related with that, so many examples are related with the innovation and the entrepreneurship development. Today morning we have the women entrepreneurship, and it is a very good example how we can start our businesses within a very short duration of time and with the limited fundings. Now, my topic is the challenges of the innovation. As we all know, there is possibilities. कहीं भी हम जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पे challenges तो रहना ही रहना है, और वो challenges को overcome किए बिना, without overcoming the challenges, we cannot innovate the things, or we cannot develop the new things. For the thinking like out of box, and many times as a teacher, and all the participants are having the background like the academics, it is very easy to taught the analytical experimental thing in the lab or in the classrooms, but some of the points we could not teach the students, like emotional abilities, creative power, or out of box thinking. We cannot teach the student in the classroom. We have the certain sort of limited time to cover our academics and all that. For this, if we start our topic of the today's discussion, the basic जो मतलब अभी तक के मैंने जितने भी references देखे हैं, इसमें कुछ points मेरे ध्यान में आए कि जो आपको बताना बहुत ज़्यादा important है. Two important things I have concluded from the previous studies. One is the resistance to the change. The diagram itself are telling us, और आप देख रहे होंगे कि diagram में ही एक बंदा है जिसने innovate करके एक wheel बनाया हुआ है. आप protest भी देख रहे होंगे लोगों का, जहाँ पे no wheels here, no new technology, no. It is quite obvious कि जब भी changes होते हैं या कोई भी change हम करना चाहते हैं, उसके वो changes के अंदर hurdles होते हैं, challenges होते हैं. वो challenges को हमको overcome किए बिना वो innovation या वो particular चीज वजूद में आ नहीं सकती. ये उतना ही fact है, बराबर. अगर हम लोगों को इन सारे parameters को overcome करना, कैसे overcome करना चाहिए, this is all about this particular session. So it is very necessary if we are thinking about the development of an organization or in any particular company or any industry. It is very much necessary we have to have this particular ability to accept the change. Nowadays, many peoples and the many organizations are going to collapse
due to the resistance to the changes. If we are not changing our methodologies, our pattern of working, or our thinking, we could not achieve the required task or the vision set by the organization or the top management of the organization. अगर हम पुराने ज़माने की चीज़ें अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और नई जनरेशन को कोप अप करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल बहुत कम लिमिट में है. हमको अगर आगे बढ़ना है और हमको अगर नए पैटर्न्स को, नए चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारी सस्टेनेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. तो हमको चेंजेस को एक्सेप्ट करना सबसे बेसिक और मेजर प्रॉब्लम है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी है we have to update ourselves also and the product also or our required target also, because innovation is not there, so we cannot do anything as far as the innovation is concerned. This is the one of the biggest challenge in the innovation. Right now we have gone through from the pandemic situations. पैंडेमिक सिचुएशन में हमने देखा कि कई बिजनेसेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी, कई के लिए ये बर्बादी थी. तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इफ वी आर लुकिंग एट द सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो we'll discuss it into the better manner. If another parameter, another challenge is like another challenge was the prediction disability. If one cannot predict the situation of the current scenario in the market and the business opportunity in the market, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर और एक अच्छा इनोवेटर नहीं हो सकता है. इसका कारण ये है कि जैसे आपने देखा कि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस ग्रुप के, सैनिटाइजर इंडस्ट्रीज हो गई है, मेडिकल साइंसेस हो गई है, इसके बाद में आपने देखो सोशल मीडिया साइट्स हो गए हैं. दीज आर दी अपब्रिंगिंग एंड दी ग्रूमिंग एरियाज. ऐसी if you can tell me the answers, can you tell me the name of few services which is not charging us for giving again the services? ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो हमको सर्विस तो दे रही है लेकिन चार्ज नहीं कर रही है? अगर हम सादा पोस्ट कार्ड की स्कीम, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर स्कीम की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज चार्जिंग वेरी लिटिल अमाउंट to the peoples, but many companies are not charging us as we are using their facilities, their services. Anybody can tell me the some of the services? Anybody? Am I audible? Yes, sir, audible. Anybody can tell? Okay, no issue. We are using the services like social media platforms like WhatsApp. WhatsApp is not charging us. हम कितने सारे फाइल्स शेयर करते हैं, कितने सारा डेटा शेयर करते हैं, कितने सारे फोटोज शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं. FB हम यूज करते हैं, Instagram we are using, Twitter we are n number of social media sites we are handling. Gmail अकाउंट्स हमारा सबका है, हम Gmail की पूरी सर्विसेज यूटिलाइज करते हैं. लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक मेल भेजा और आपको ₹1 पे करना है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, बराबर. तो दीज आर द एरिया एंड द अपॉर्चुनिटीज वेयर पीपल कैन इनोवेट देयर आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. दिस इज द वन ऑफ द पैरामीटर. एंड इफ दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, इफ यू वांट टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, अगर आपको कोई चीज इनोवेट करना है तो यू हैव टू हैव द प्रिडिक्शन एबिलिटी ऑफ द future market and the business. Now another challenge in the innovation is lack of motivation. I can't do it. If you see the picture very much clearly, this I remove the T from this particular thing, so I can do it. This without motivation we cannot innovate anything, because अगर हम motivated ही नहीं है कुछ काम करने में तो उसको डेवलप करने में, उसको आगे ले जाने में, या फिर उसके अंदर कोई इनोवेटिव आइडियाज को शेयर करने में या इनोवेशन को डेवलप करने में हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन चाहिए. अब मोटिवेशन होता क्या है, इसमें हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीजें हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. चैलेंजेस टू द इनोवेशन
there are two categories of the innovation and the innovation. दो लेवल पे हम इनोवेशन के चैलेंजेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज द इंडिविजुअल लेवल एंड द सिस्टेमिक लेवल. ऑर्गेनाइजेशन लेवल की भी कुछ चैलेंजेस है और एक होता है इंडिविजुअल चैलेंजेस. At the individual challenges, if I am talking about the lack of motivation, if the particular task is given to you or any employee of the company, he tell like that कि why should I do this? इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं ये क्यों करूं करके, बराबर है. तो this is the question from that particular person, but because he is not motivated towards the work, becoming more and more robots nowadays. We are going to the office, assigned duty we have completed, going back to the home, having the lunch or a dinner, and seeing one particular type of serial and sleep. These are the activity. हम रूटीन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं. रूटीन एक्टिविटीज हमारे जिंदगी का पार्ट है और हम वो करते आ रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारी रोबोटिक लाइफ हो चुकी है. सुबह उठना है, ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, और ये करके हम लोग यहाँ पे अपने आप को सीमित कर रहे हैं. तो दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द लैक ऑफ मोटिवेशन. डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ गोल इन द लाइफ. हमारे पास में एक गोल सेटिंग नहीं है. हो सकता है कि फॉर इनोवेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, हो सकता है कि हमने एकेडमिक्स में रहने के कारण पीएचडी कंप्लीट करना है, या फिर पेपर पब्लिकेशंस करना है, या फिर डे टू डे की लाइफ के काम कंप्लीट करना है. इट इज नॉट एक्चुअली माय cup of tea in this particular parameter or discussion of the point. यहाँ पे हमको एक बात का ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमको एक लेवल के ऊपर में कुछ चीजें हैं, जैसे आपको मैं अभी डिस्कस करूंगा इसमें कि नीड ऑफ हायरार्की इज गिवन बाय द मास्लो. अगर ये आप देखोगे, इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें इफ वी आर हैविंग द सो मेनी पीपल्स डेटा इन द सर्वे लाइक दैट, कि हमारी जो पहली 3 लेवल आप देख रहे होंगे, पहली 3 लेवल की अगर मैं बात करूं, लव बिलोंगिंग से लेकर, लव से बिलोंगिंग से लेकर नीचे तक अगर हम जाएंगे, सेफ्टी, फूड एंड द शेल्टर, अगर हम इसकी बात करें, घर, खाना, सेफ्टी और इसकी बात करें, तो 95% रिसर्च से दैट एंड थ्योरीज मास्लोज hierarchy of needs theory says that ki 95% of the peoples are doing their routine activities and they are reaching at the only love and belonging level, that is the social life. वहां तक ही लोग पहुंच पा रहे हैं. अगर हमको और देखा जाए, इस सर्वे का बोलना ऐसा है कि इसमें अगर 5% peoples are going for this particular survey, that is STEAM and the self actualization, and if you are looking at this theory, if the one person is going for the upper or higher 2 levels, then only it is considered it is motivated. He is motivated or she is motivated. Now in many times I concluded these points also. Higher level needs is actual motivation. If we are going for the higher level needs, higher levels, it is only the matter of the we are just doing the routine activities. हो सकता है हम प्रोफेसर की, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हो, तो सकता है 4-5 साल बाद में हम लोग एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएं, एसोसिएट प्रोफेसर के बाद में और आपका प्रमोशन हो जाए. तो क्या होता है, बाय द टाइम पीरियड ऑफ टाइम, प्रमोशंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ योर रूटीन एक्टिविटीज. If I am the businessman, I am going to the industry, I am shouting on the laborers, providing the goods to the companies, or calling to the vendors, taking the follow of the vendors and all that activities. After the end of the day, I will go to the home, having the fun with the family and sleep. Apart from this, it is happen in the all of the fields. If you are farmer, if you are the serviceman, if you are the factory owner, in each and every field we are doing the routine activities. If we want to motivate ourselves, we have to think about the higher levels. So we do not have the motivation to do the innovation. We have to do some sort of activity like that. It is
if we are not motivated, how we can go for the innovation or some sort of creativity. If anybody want to be an entrepreneur without innovation, he cannot be a good entrepreneur. क्योंकि मार्केट में अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो लॉन्च करना चाह रहे हो, वो पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट है वो इनोवेट होके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एग्जिस्टिंग रिप्लेसमेंट के मेथड्स हो, या फिर उसका इनोवेटिव इफेक्ट हो, या फिर प्रोडक्ट का कोई ऐसा मेथडोलॉजी आपने चेंज की हो, तो ही इनोवेशन के बाद ही हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे सस्टेन करेगा. Then another biggest challenge towards the innovation is the role clarity. आपको करना क्या है, आप कौन हो, कौन से रोल पर हो, आप कब क्या कर रहे हो. Some sort of in the many of the companies, sometimes you have to play a role of in a day-to-day life. Also, I have to play, or you have to play the many roles. You are the teacher here, you are the father, you are the husband, you are the you have the son, you are acting as a son also. Any n number of activities and number of role you are doing in the company. Like that, some of the companies are having. Sometime you have to be a marketing person. Sometime you have to see the accounts. Sometime you have to go for the marketing. Sometime you have to look at the another portfolios also. So this is the one of the hurdle or the biggest challenge. We cannot innovate the things. We do not have the low रोल क्लियरिटी. हमको हमारा रोल क्लियर कट चाहिए. रोल क्लियर कट अगर किसी कंपनी में है तो ही वहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज आके डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं. Then is come around the work-life balance nowadays is very, as you look at the speech of the Ratan Tata presently, he has addressed the symbiosis spooning. तो एक बहुत अच्छा पैरामीटर वहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया हुआ है वर्क लाइफ बैलेंस का. तो हार्डली इज काइंड ऑफ लाइक दैट कि पीपल्स सक्सेसफुल पीपल्स हैव द वर्क लाइफ बैलेंस. कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है कि अगर प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल है तो पर्सनल लाइफ को हैम्पर हुआ है. पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो आपका करियर के ऊपर में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस आए हैं. तो हाउ टू मैनेज इट इज अगेन द आर्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. वी हैव टू डेवलप. Some organizations is also do not have any kind of the role clarity, which is the biggest loss of the company. If the person doesn't know his job, तो वहाँ पे problems बढ़ना है, problems कम नहीं होंगे. एक person है जिसको आपने suppose संजीव सर को अगर मैंने बोला कि आपको एक आज आप मार्केटिंग पर्सन हो, दूसरे दिन बोलता हूँ आपको अकाउंट देखना है, तीसरी बार बोलना है आपको सेल्स में जाना है, आपको विजिट करना है. This should not be the case in the organization. We have to avoid. So the clarity about the role is also a problem. That is also a challenge at the individual level. What we have discussed, the two parameters we have with us is organization level and the individual level. We are discussing the first point, that is the individual level. Next parameter, this is the one of the very prominent parameter, is fear of the failure. बहुत बार ऐसा होता है कि sometime I have the good idea. हो सकता है कि कंपनी के मैनेजर के सामने मीटिंग में आपके मन में ये चलता है कि मैंने अगर आइडिया दे दिया तो हो सकता है वो अगर फेल हो गया तो क्या होगा. But any organization, any industry have the success अगर वो उसके maximum employees, maximum till the laborers, if they are participating in the suggestions, they are giving the suggestions for the development of the company. तो यहाँ पे एक होता है कि मन में ये होता है कि भाई if I have given the suggestion and my suggestion is not worked, अगर तो मेरे मन में एक सवाल रहता है या मेरे मन में एक fear होता है कि अगर मेरा आइडिया फेल हो गया तो बॉस विल टेल यू stupid, your idea is not worked. So this is again the one of the biggest challenge in the against the innovation. As we have discussed about this particular thing, I have in my mind I do not want to fail. हमारे यहाँ पे इंडियन मेंटालिटी में बहुत बार हम देखते हैं, बच्चों के एजुकेशन पैटर्न में देखते हैं कि मैं फेल होना नहीं चाहता. अगर मैं फेल नहीं होगा मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा. एक्सपेरिमेंट अगर फेल नहीं होगा तो इनोवेशन होंगे कैसे. हमको बेसिक मतलब
mother is for the innovation is you have to try. Don't bother about the failures. If we are again and again thinking about the failures, so it is very very difficult to innovate or have the thinking, critical thinking, like we say that the out of box thinking. हम ये कर ही नहीं पाएंगे. अगर हमको ऐसा करना है तो हमको सोचना पड़ेगा, हमको फेल होने से डरना नहीं है. आई हैव फियर टू द फेल्यूर. मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करूंगा कि आजकल आज अगर मैं देखता हूँ कि माता पिता में भी अगर देख लीजिए, बच्चों में भी देख लीजिए, अगर 4 बच्चे हैं जिनका पहले बच्चे का अगर परसेंटेज अगर 90% ही इज स्कोरिंग, ही इज सैड. व्हाई? बिकॉज अनदर फ्रेंड इज स्कोर्ड 95%. 90 ask the 95% student, he is again sad. Why? What is the reason? Another person is have the 97%, and ask the 97 percentage of student, उसको पूछो आपकी भाई आपको तो 97 मिला, तो वो बोलेगा I am sad because another person is got the 99%. तो इन दिस एरा अगर हम ऐसे अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर बच्चों के साथ में भी अगर रहेंगे, या फिर हम लोग सिर्फ ओनली वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग 60 और 50 और 75 की तो बात ही नहीं है, दे आर कंसिडर्ड एज गुड एज द फेल स्टूडेंट्स. तो वी हैव टू थिंक इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑल्सो, कि वी हैव टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द न्यू आइडियोलॉजीज फॉर द इनोवेशन पर्पस. Idea does not work, boss will like that. I already told you. It will. अब क्या होगा कि अगर मीटिंग में if it happens with the particular employee कि he has given the certain idea and this sentence is come, the idea does not work, boss will say, oh stupid fellow, your idea has failed. I may get a poor remark in my service book, or not getting the promotion, or not the increments. तो वो पर्सन आपका आइडिया देगा ही नहीं. आई विल नॉट शेयर माई आइडिया एंड आई विल नॉट इनोवेट. आई विल डू माई रूटीन एक्टिविटी फॉर द पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन. मैं उतना ही काम करूंगा, उससे ज्यादा काम नहीं करूंगा. क्यों करेगा? क्योंकि उसको उसका मोटिवेशन नहीं है, या उसको फियर है, उसके माइंड में फियर है. तो वहां पे इनोवेशन के चांसेस कम है. इट इज अगेन दी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज अगेंस्ट दी. अब ये जो आप देख रहे हैं चलता है भाई, ये सबसे बड़ा पैरामीटर है. इफ यू आर लुकिंग एट द वीडियोस बाय द डॉक्टर रजत अग्रवाल, द वेरी ब्यूटीफुल कोर्स NPTEL has designed, innovation business model and the entrepreneurship. I have given the link also. Everybody should listen this particular. This is what I have referred from that particular thing. So he is delivering in this his session. चलता है अप्रोच मैक्सिमम कंपनीज का बर्बादी का सबब बन चुका है, या द रीजन बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज और बिग कंपनीज. दैट इज चलता है अप्रोच, सब चलता है. अनदर पॉइंट इज होता है, चलता है, दुनिया है. दिस इज द वेरी 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 मच रिस्ट्रिक्टेड इन द एनी ऑर्गेनाइजेशन. चलता है, अगर अप्रोच अपना चलता रहेगा तो ये काम भी ऐसे ही चलते रहेंगे और हम लोग आगे इसमें इनोवेशन की तो बात ही दूर है, हमारी कोलैप्स या फिर वो पर्टिकुलर कंपनी का कोलैप्स बहुत दूर नहीं है. तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. रेजिस्टेंस, इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस टू इनोवेट. चलता है अप्रोच. वी शुड नॉट अलाउ दिस टाइप ऑफ अप्रोच इन द एंटरप्रेन्योरशिप और द इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ऑल. इसको हमको बनाना पड़ेगा, या फिर हमको इस पे सोचना पड़ेगा. नहीं चलता है, जब तक हम चलता है को नहीं चलता है में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो हम इनोवेटिव लेवल पे, इनोवेशन के लेवल पे नहीं जा पाएंगे. आई हैव मेनी एग्जांपल्स विद मी, बट इट्स टाइम नॉट परमिटिंग अस. वी हैव टू डिस्कस अनदर टॉपिक्स आल्सो. तो ये पर्टिकुलर हमारा जो पॉइंट है, चलता है अप्रोच को, इसको हमको कंट्रोल करना है. ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम implement करते हैं तो it is so beneficial for us, and we can implement this particular policy. नहीं चलता है in the with our students also, so that they will be a good professional and having our name fetch the some fame from the market to our organizations. Then comes to the first parameter is over, the individual level challenges are over. And now we are discussing at the organization level challenges.
Sir, in the theory, many times it is there. The employees are not powered to innovate. Empowered to innovate means that they are not motivated, so they are in position to share the new ideas for the any type of reason, having the fear, role clarity, and all that. So, if the organization want to be a success and a successful innovator, so he has to empower the employees to give the ideas, to share his ideas, and how it will it will become a very frequent, how it will become very frequent. इसके लिए हमको कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी. कुछ पॉलिसीज में क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, we'll discuss. The meaning is that the some top persons are allowed to share the ideas, but if the industry and the organization is willing to join, willing to have the innovative or wanted to be a sustainable in the market, so we have to take the suggestions from the customers, from the all types of the stakeholders, then and then only we can innovate the things. Next is you need to build the organizational culture. We have to build the culture कि anybody can give the idea. अगर वो आइडिया अच्छा लगता है या पसंद आता है तो वो आइडियाज के ऊपर में काम होके हमने थोड़ा सा उसको डेवलप करना चाहिए, ताकि उसके रिजल्ट्स, उसके फ्रूट्स हमको कुछ दिनों में मिलना शुरू हो जाए. अगर if the organization or industry is not going to innovate, or innovation is or thinking out of box is stopped, the collapse will be very near. ये अगर नहीं होता है तो हम वो बहुत जल्दी वहां पे कोलैप्स होने वाला है. ये आइडियाज को हो सकता है, एम्प्लॉयज के आइडिया हो सकता है, कम कस्टमर के आइडियाज हो, उसके हिसाब से हम बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम्स. Concept like WPM, workers participation in the management concept, we have to implement for the more productivity and the innovative things. Total quality management, TQM is known by the TQM, we have to implement in the organizations. We can involve our most of the employees to contribute in getting the more and more ideas. When he is going to share the more and more ideas, when we have the policy of the motivation in any sense, like many types of industries are having the practice the employee of the week. अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका फोटो लगा है, क्लैप फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, मीटिंग में अप्रिशिएट कर दिया, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएशन बताया कि भाई आपने जो काम किया वो अच्छा किया है, बाकी के उनको काम से उन्होंने कैसे वो काम किया है, वो टारगेट कैसे अचीव किए, तो उनको शेयर करना चाहिए. तो another employee will in a thought ki in the next week or in next month my photo may be there. It is a sort of things. If the person is getting the employee of the week, we have to go for the employee of the month and employee of the year. So these are the motivation types of things. ये वेज है जिसके जरिए से हम किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं और वो अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए मोटिवेट रहता है. इसमें some we have to have the very strong recommendation by the Dr. Rajat Agarwal in his deliberations and his book, the specific innovation strategies. Reward policies must be there. If reward policy is there now, it will implement it. It will go to the next level. है सही बात है. अगर किसी को कुछ चीज का इनाम मिलता है तो वो मोटिवेट होता है, वो आइडियाज को शेयर करता है, देता है, और वो चीज से सिस्टम आगे बढ़ती है. बट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अगर हम देखें, इफ यू आर हैविंग द डिफरेंट कलर हेड्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एक काला, एक पीला है, एक येलो या एक पिंक है, एक है, तो green means the positive person, red means the negative person. If the all heads are the red in your group or in your organization, it is so dangerous for the health of the organization. So we have to have some different color head in our organization, having the negative peoples, having the analytical peoples, giving the new ideas, developing the ideas, analytical persons, good marketing persons. We have to have these all heads in our organization for the successful
the successful environment or the culture development as the innovation is required in nowadays. Now, to overcome the challenges at the organization level, we have to have this type of policies or the some sort of refreshing programs for the workers or maybe laborers or maybe at managerial level. If you're looking at the all organization chart of any industry, टॉप में बहुत सारे लोग नहीं होते, टॉप में कुछ लोग हैं, टॉप में ही कुछ लोग हैं, उसके बाद में मिडिल के अंदर में कुछ अमाउंट होता है, और अगर आप देखोगे तो जो लोअर में है या मिडिल लेवल में है वहां पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, वर्कर्स है, मार्केटिंग पर्सन है, यहाँ पे मॉब ज्यादा होता है. तो इनको इन्वॉल्व करना इनोवेशन प्रोसेस में, न्यू आइडियाज का शेयर करना, इनकी फीडबैक्स के ऊपर में काम करना, वो फीडबैक को लेकर हमने हमारी रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को बनाना चाहिए. If you are not connected to your stakeholders, so it is very difficult to sustain in the market. अगर आप देखोगे तो nowadays product life is also decreasing. We have to come with the new ideas in the market for the sustainability of any business or any entrepreneur or the innovation. Now, innovation is centralized to the some of the functional groups. It should not happen in the any organization कि एक दो तीन ग्रुप से ही हम लोग आइडिया ले रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम जो आइडिया दे रहे हैं वही आइडियाज हमारी काम करेगी, वो ही आइडियाज हमारा फंक्शनिंग करेगा, हम मार्केट में सस्टेन हो सकते हैं, हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अच्छा है, इसमें कोई चेंजेस का या डेवलपमेंट का, इनोवेशन का कोई भी अभी पैरामीटर है नहीं. तो ये हमने अवॉइड करना चाहिए. ये कोई भी इंडस्ट्री में फेल्यूर का एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है. ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमको इससे ओवरकम करना पड़ेगा. इनोवेशन टू बी ऑर्गेनाइजेशन वाइड फेनोमेना. इनोवेशन जो होता है ये कोई भी एक बार इनोवेट होगी चीज नहीं होगा. आपने देखा, मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि एक व्हील वहां पे बना हुआ है. नाउ व्हील इज द इन्वेंशन, नॉट अ इनोवेशन. Now what the another person is doing, वो चक्का जो पुराना देख रहे हैं आप लकड़ी का बना हुआ है उसको डेवलप किया है, वो इनोवेशन पार्ट में आ रहा है, उसके रिविजन्स होते जा रहे हैं. अभी ट्यूबलेस टायर्स आ गए हैं, उसके अंदर में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है. तो ये इनोवेशन का पार्ट है. इन्वेंट उस टाइम पे हो चुका है. हर बार आपको इन्वेंट नहीं करना है, कोई नई चीज नहीं बनाना है, आपको जो चीज बनी हुई है उसमें प्रोसेस के अंदर में चेंजेस भी लाना है. अगर आप चेंजेस नहीं ला पा रहे हो तो आप मार्केट में ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं हो पाएंगे. दिस इज द कंप्लीट ट्रुथ. आप ये बात को मेरे लिख सकते हो कि हम लोग सस्टेन अगर करना है तो वी हैव टू इनोवेट, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स. नाउ at this point of time I just wanted to tell you the one short story. एक सर्कस में एक महावत हुआ करता था. उसने एक छोटे से एक हाथी को, छोटा हाथी का छोटा बच्चा होता है ना, उसने अपने सर्कस में लेकर आया और उसको एक जगह एक बड़ी सी जंजीर लेके, एक चेन लेके उसको एक खूंटे से बांध दिया वो पर्टिकुलर इसमें. अब उसकी जो चेन थी उतनी ही चेन थी. अब उसके बाद में क्या हुआ कि वो बड़ा हो गया, जब उसको फंक्शन का टाइम आया या फिर उसने अपना पार्टिसिपेट करना चाह रहा था, उसको सर्कस में लेके जाना था, तो उसने क्या किया, जब वो अच्छी एज का हो गया या बड़ा हो गया है तो उसने उसकी चेन खोल दी. अब चेन खोलने के बाद में क्या हुआ कि चेन खोलने के बाद में भी हाथी उसी सरकमफेरेंस में मूव कर रहा था जिससे उसको पहले से बांधा गया था. मतलब ये है कि उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको सर्कल कर दिया गया, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया कि तुझे इतनी लिमिट के अंदर में इतने ही एरिया में घूमना है, फिरना है, खेलना है. बराबर है. तो एज वी वांट टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वी हैव टू इनोवेट, but thinking must be out of box. If we are not doing this, we are going to collapse our system. इसके लिए हमको उसका वो पर्टिकुलर को इनिशियल स्टेज पर ही लेना पड़ेगा. जब हाथी जब बच्चा था तभी वो चीज हमारे पास आगे आएगी, नहीं तो नहीं आएगी. बराबर है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट lack of collaboration between the departments, between these functional areas. If I have the marketing department, if I have the account section, if I am having the manufacturing unit, all the units have to be in the coordination or the collaboration. अगर इनका collaboration नहीं रहेगा, इनकी internal feedback नहीं रहेंगे तो system may get
fail one day, it will not fruitful for the company, it will not fruitful for the our system and all that. It is very necessary कि we have to have the some sort of collaborations कि रहना चाहिए. जैसे कोलैबोरेशन की पिछली बार में एक डेफिनेशन पिछले लेक्चर में आपको दी गई है कि सब जेरोक्स वालों का सर ने बताया था कि सारे जेरोक्स वाले बैठे हैं और 2 रुपए में जेरोक्स मिलेगा, कोई 1 रुपए में दे रहा है, कोई 1.5 रुपए में दे रहा है, कोई 50 पैसे में दे रहा है. ये नहीं होना चाहिए. दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज. Now, at the organization level, another point is that if we look at the severity of the problem, lack of recognition of the effort. If somebody is given you the idea, अगर आइडिया उसका फेल भी होता है तो आपने ये देखना है कि वो पर्टिकुलर आइडिया का इम्पैक्ट पॉजिटिव तो हुआ कम से कम. रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन वन डे. अगर हम देखेंगे कि आज हमने बोया और कल फ्रूट्स आते नहीं है, नॉट पॉसिबल एट ऑल. वी हैव टू recognize the effort of each and every team member, then only we are going to sustain in the market as far as the innovation is concerned. Many organizations, many industries have the lack of internal heroes. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने बोल दिया कि एम्प्लॉय ऑफ द वीक बहुत अच्छा काम किया, आपने एक अप्रिसिएशन लेटर निकाला और उसका फोटो आपने एक फ्रेम के ऊपर में चिपका दिया और बोला कि ये इंटरनल. अगर आप इंटरनल हीरोज अगर अपने सिस्टम में, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने सिस्टम में, अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने अतराफ में अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप उनको अचीवर्स कैसे बनेंगे, इनोवेटर्स कैसे बनेंगे. तो ये इंटरनल हीरोज आर रिक्वायर्ड, very much required in this system. And as a top of the company owner, you have to float this type of culture in the industry. And again, my dear friends, current offering are the successful. If I in a particular position कि ठीक है हम जो दे रहे हैं वो मार्केट में बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, then it is okay. You do not need to innovate the things. But time has changed, my dear friends. You have to innovate the things if you want to sustain in the market. Your product must be having some sort of features. अगर आप देखोगे, आप चाइना को देखिए और आप चाइना को देखिए, चाइना का मार्केट क्यों बना है? दे हैव वर्कड ऑन द कॉस्ट. आपको ये फोन अगर सैमसंग का फोन उठाओगे तो आपको 40,000 में मिलेगा, और अगर आप माइक्रोमैक्स का या फिर अदर कोई कंपनी का फोन उठा लो, आपको वो आधी कीमत में मिल जाएगा सेम फीचर्स के साथ में. तो आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी या फिर ऐसी कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे आप विभिन्न हो, आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा होना चाहिए. हम भी अगर आप देख रहे हैं मार्केट इज वेरी वोलेटाइल. आप देखो, आपको कोई चीज खरीदना है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हो, कभी आप अमेज़न पे जाते हैं, कभी फ्लिपकार्ट में, एंड नंबर ऑफ साइट्स आर अवेलेबल because of the volatility. And the another parameter is the product life has changed. We are not having that much of level of our product. Current offering are the successful. We cannot consider it because market has changed. Day by day आप देख रहे होंगे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं. उसमें इनोवेशन अगर नहीं होगा तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे. Missed connection with the customers. Whenever we are in a particular system, we have to get connected with our particular students, our particular customers. अगर हम उनसे connected नहीं है तो आपने वो connected अगर आप नहीं है तो वो connection में हमको आना पड़ेगा, वो connection में हमको रहना पड़ेगा. हम वो miss नहीं कर पाएंगे. वो miss कर दिया मतलब हम कहीं ना कहीं हम collapse कर रहे हैं, right? Miss connection with the customer, it has to be avoided. हमने उनके टच में रहना चाहिए. जरूरी नहीं हमको कॉल करना है या फिर हमको हर बार ये करना है. सो मेनी सोशल मीडिया आज अवेलेबल, FB है, फेसबुक है, इंस्टा है. दे कैन मैसेज यू, दे कैन गिव द फीडबैक कि भाई ये इसमें ये प्रॉब्लम है, वी हैव टू इनोवेट दिस, यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. ऐसे ये सब चीज़ों में अगर हम लोग काम करेंगे तो ही प्रोडक्ट इनोवेट हो पाएगा. हो सकता है कि एक इनोवेशन हमारा फेल हो जाए, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अगर हो रहा है तो इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज होना चाहिए. रॉन्ग मेजरमेंट ऑफ द इनोवेशन, जो मैं आपको बता रहा था कि उनके कभी क्या होता है कि हमने वो पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को, वो पर्टिकुलर आइडिया को या वो इनोवेशन को हम रॉन्गली मेजरमेंट कर लेते हैं. हो सकता है कि वो अगर फेल हो रहा है तब भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नहीं है,
देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन वन डे, इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। थोड़ा करके ही मार्केट बनेगा। अगर आप चाहोगे कि मैं डे 2 से इन एंटरप्रेन्योरशिप वी कैन नॉट हैव द प्रॉफिट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, we have to wait and we have to have the some sort of satisfaction level at the initial level। थोड़ा सा भी आया तो भी चलता है। इसके लिए हमको कुछ पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स वी हैव टू डिजाइन, की परफॉर्मेंस इंडेक्स वी हैव टू डिजाइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन and the industry so that people will motivate to the innovation। These are the some of the points I want to narrate about the at the organization level। Next, and the biggest point is that the ownership। Once you have to have the ownership of anything my dear friends, that organization will not going to collapse in any sense। उसके सक्सेस का, उसकी तरक्की का, उसके आगे बढ़ने से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर मेरा ओनरशिप नहीं है तो नहीं होगा। एक स्टोरी है, जो 2 persons has joined the गवर्नमेंट सेक्टर। दो दोस्त थे, उन्होंने अपने गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन किया। उन्होंने सोचा कि यार क्या हम रोज का जॉब ऐसे करते हैं, रूटीन एक्टिविटी होती है। तो एक ने बोला कि मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं शहर जा रहा हूँ। एक ने बोला कि मेरी खेती है और मैं खेती करके मैं अपनी खेती करूंगा और अपने घर से ही काम करूंगा, ये सारे काम को मैं लेकर आऊंगा अपने इसमें। आफ्टर सम टाइम ही हैज स्टार्टेड वन कंपनी, और एक कंपनी के बाद में उसने स्टार्ट किया और कंपनी उसकी अच्छी चलने लगी। तो उसका जो दूसरा फ्रेंड है जो गाँव गया था, उसको कुछ परेशानी आई, तो उसको लॉसेस थे, तो उसने एक जॉब ज्वाइन करना चाहा। जिसके पास में रिज्यूमे गया तो उसका दोस्त निकला। फॉर्चुनेटली ही गॉट द जॉब, उसको जॉब मिल गई। अब उसने जब जॉब ले लिया तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। बाद में जो ओनर ऑफ द कंपनी है वो वहाँ बैठा था। उसने उसको पूछा कि हम लोग दोस्त थे, तुझे याद है ना? तो बोले हाँ मुझे याद है, मैं भूला नहीं। तो बोले हम लोग एक ही कंपनी में, एक ही सेक्टर में थे, हम वहाँ पे नौकरी करते थे, हम एम्प्लॉय थे, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, चाय पीते थे। तो उसने ओनर ने बोला कि मैं ये बात आपसे करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने अब जिक्र किया ही तो मैं आपको बताता हूँ कि यस ये बात सच है कि हम नौकर थे, हम एक जगह काम करते थे, एक लिमिटेड सैलरीज हमारी थी और हमारी एक लिमिटेड सोच थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता कि जब हम लोग साथ में एक बार जा रहे थे, आप और मैं साथ में थे, और ऑफिस छोड़ने के 2 किलोमीटर बाद मैंने आपको ये बोला कि मैं ऑफिस के लाइट्स और फैन भूल गया हूँ, बंद करना भूल गया हूँ। तो मैंने आपको बोला कि अपन वापस जाके बंद कर देते। आपने बोला अपना क्या जाता है, जाने देना, जो भी लॉस होगा वो तो कंपनी का होगा या इंडस्ट्री का होगा। लेकिन आप नहीं आए, मैं वापस गया और वो पूरे लाइट्स और फैंस मैंने स्विच ऑफ किए। इसका मतलब ये है कि मैं आज भी ओनर हूँ और कल भी ओनर था। ये जो ज़ील है उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में जो आई है, वो एक दिन में नहीं आती भाई साहब। You have to develop, you have to practice it। It is not a matter of switching off the lights and fan in the organization or the industry, but it is all about the having the ownership। कोई भी काम में आपकी अगर ओनरशिप है तो ही वो काम का सक्सेस और उस काम में करने के लिए आपको मजा आएगा। अगर आपको हायर लेवल अचीव करनी है तो टेक ओनरशिप ऑफ एनीथिंग माय डियर फ्रेंड्स, एनी वर्क। इफ वी आर डूइंग दिस तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल है, otherwise we are facing some struggling parameters and all that। Now these are my references and I conclude over here। Thanks a lot for the patience hearing, and over to Sanjeev sir। If anybody having any question, if you want to interact, it's welcome, you can interact। Thank you, sir, for a nice presentation. Yes, audience, is there any question? From audience side? Okay. Sir, basically, whenever we discuss the word innovation, yes, there are n number of challenges. I can take one example of from my side. We know that the safety pin, the women's which are used as safety pin, data pin bolte hain usko, right, okay। Whenever we go for the research, I think there are 837 patents on that particular small
cheap, small, that is Pin, safety pin. pin. Right, Safety right, pin is there. Okay, exactly. 837 safety pin. But whenever we surround in a circle in which that we have to take some innovation and we share that idea with someone, and the reaction is, "अरे ये क्या work है? Is it a work? ये तो ऐसा है वैसा है." But if we share that work with the IITians people or NITians people, they really appreciate us. So how we can challenge this such type of environment in the innovation? So that is the main challenges in the innovation. Sir, as I told you कि Rome cannot be built in the one day. अब आपने जैसे बोला कि companies are going to patent the new ideas if they are changing the 1 mm ना, so they have to register their self in the form of the patents and all that. तो इसका एक ही छोटा सा मैं आपको एक वे बताता हूँ कि इसका एक ही है कि आप अपना काम करते रहो. Do your work, do your innovation and register it from the firms like the patent office, IPR. You have to have work on this particular parameters. जब आपका success आएगा ना sir, please start working in the silence. Later your success will make the noise. This is the one my sentence you have to keep in your mind. Your success will speak in front of the people. You just need to work on your parameters, and all the best for your coming projects also. Coupler, I think you are working on the coupler. Yeah, definitely, sir. Yes, any question from audience side? I think there is no question from any, sir. So, No issue. Hello, sir. We will conclude this session, sir. So, very good afternoon. It has been such an honor to be a part of this wonderful session by Professor Gaffar, sir. On behalf of the organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Professor Abdul Gaffar, sir. Thank you, sir. Sincere thanks to heads of the various departments, a wide round of applause, and the thanks to all the participants who made the session a memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us make this event. Thank you, one and all. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir.